आपके पूरे कोर्स की सिलेबस आउटलाइन को अगर मैं इस डेफिनेशन के तनाजुर में प्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसी होगी। ये जो हमने कहा डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर द लॉन्ग टर्म, तो डायरेक्शन, स्कोप, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं आइए वो लिखते हैं। डायरेक्शन, स्कोप एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। Chapter number 1, if I can recall correctly, chapter number 7, chapter number 8, and I believe chapter number 14. Chapter number 1 is strategy, stakeholders, and mission. Chapter number 7 is strategic implementation. Chapter number 8 is finance, R&D, and marketing strategy. And chapter number 14 is, I believe, strategic performance measurement. फिर हमने देखा एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की हमने। तो कंपैरेटिव एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है हमारे कोर्स का, और इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें कॉम्पिटिटिव, दिस चैप्टर इज आई बिलीव कंपैरेटिव फोर्सेस, एंड इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली दिस चैप्टर इज कंपैरेटिव एडवांटेज। उसके बाद हमने हाईलाइट किया चेंजिंग एनवायरनमेंट को, चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं और अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पाऊं तो मेरा ख्याल है कि चैप्टर नंबर 2, chapter number 6, chapter number 16 और chapter number 17 I believe these are the chapters, जिसमें chapter 2 है about environmental analysis, chapter 6 is I believe about methods of development, किस तरह से हम अपने आप को डेवलप करेंगे, चेंजेस इन एनवायरनमेंट को एड्रेस करेंगे। इसके अलावा 16 is I think about identifying and assessing risks, and chapter 17 is I think about controlling risk. Okay, उसके बाद हमने देखा competencies and resources, competencies and resources की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो चैप्टर्स हैं is chapter number 4, चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर 10 है,
11 है, 12 है, 13 है और if I can recall correctly 15 है. Chapter number 4 is I think about internal analysis. Chapter 9 I believe is about operations strategy. Internal, how will you manage your internal operations? Internal resources को कैसे manage करेंगे? Is I believe about IT strategy. Okay. Chapter 11 I believe is about recruitment, training and development. Chapter 12 है. Appraisal का chapter आपका 13 है. And how to manage your resources when you are carrying out a project is I believe covered in project management chapter. उसके बाद जब आप आते हैं stakeholders expectations पर, stakeholders expectations पर आप आते हैं, तो I believe आखिरी 3 चैप्टर आपके कोर्स के 18, 19 और 20, जिसके अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, वैसे तो पूरी बिजनेस, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट इज द स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन. शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन जाहिर सी बात है इज टू अर्न द मनी, तो वो तो है ही. और अदर स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस आपकी इन चैप्टर्स में डिस्कस की गई हैं कि भाई बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, यू हैव टू बी ethical conflict resolution, corporate social responsibilities. So I believe if we divide our course in the light of this definition, so our course is all about strategy, direction, scope, long-term planning, comparative advantage, market में compete किस तरह से करेंगे, कैसे advantage लेंगे, changing environment, environmental factors जो कंपनी पर असरअंदाज होंगे वो हमने देखने हैं, क्या रिस्क होंगे, किस तरह से हमने अपने आप को डेवलप करना है. competencies and resources, हमने अपना इंटरनल एनालिसिस करना है. वीकनेसेस तो हमने देख ली इधर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हमें देखनी है कॉम्पिटेंसीज एंड रिसोर्सेज के अंदर. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम देखेंगे. ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी, इंटरनल ऑपरेशंस को हम किस तरह से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, आईटी को किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए. रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल, भाई लोग जो कंपनी चलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स, उन पर हमने क्या काम करना है, कैसे लेकर चलना है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किन चीजों का ख्याल रखना है. और शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन. तो अगर देखा जाए तो इस डेफिनेशन ने हमारे पूरे कोर्स को समराइज कर दिया. तो ये सारे के सारे चैप्टर्स इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे. आई होप एंड बिलीव the concept of a strategy is very clear. Strategy is a very important aspect to discuss. Very important aspect. पूरी कंपनी को चलाने के लिए प्लानिंग है. प्लानिंग के बगैर तो हमारा दिन हम नहीं निकाल सकते सर. मिलियंस और बिलियंस की इन्वेस्टमेंट, उसको हम कैसे लेकर चलेंगे. So in the next class we'll be starting our discussion from chapter number 1, strategy, stakeholders and mission. Thank you very much for attending this session. See you soon in the next session, in the next class. Till then, Allah Hafiz.